अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहू रय्यान यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने हमें दीन की निस्बत से यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। It's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, like Qazi Saheb mentioned, that He's granted us the tawfiq to sit for the cause of deen. कल ही एक रिवायत बुखारी शरीफ में हमने पढ़ी और आप लोगों ने बार बार सुनी होगी। We read the riwayat just yesterday in Bukhari Sharif, and we've heard that riwayat many times, but we mention it so we have the qadr and the value of these kinds of gatherings. The Imam Bukhari has narrated the hadith in Bab al-Da'awat, in the Bab chapter of Dua, ke jab Allah ke bande, when people gather for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, there's a special team of farishta, special jamaat of farishta and angels who find these kind of gatherings. उस जमात का यही काम है कि वो ऐसी मजालिस को तलाश करते रहते हैं और जब मिल जाते हैं, when they find these kind of gathering, the people who have gathered for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, they call each other halummu ta'alu, they call each other and they gather that gathering until the sky. आसमान तक उस मजलिस को वो घेर लेते हैं और उस मजलिस के इख्तिताम और एंड में, when the gathering finishes, they go to Allah subhanahu wa ta'ala. Even though Allah knows everything, Allah को सब कुछ पता है, अल्लाह के इल्म में एक ज़रा भी अल्लाह के इल्म से मख्फी नहीं, not one leaf is hidden from the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows each and everything. लेकिन अल्लाह subhanahu wa ta'ala फरिश्तों की उस जमात से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, where did you come from? तो वो कहते हैं या अल्लाह, हम ऐसी मजलिस से और ऐसी गैदरिंग से आए हैं जहाँ कुछ लोग आपके खातिर बैठे थे. Some people gathered for your sake, in your remembrance. जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूछते हैं कि मेरे फरिश्ते जो have they seen me, क्या उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते कहते हैं नहीं. लौ राउका, if they see you लज़ादू, they would increase glorifying you, जो they would increase praising you, और ज़्यादा तस्बीह करते और ज़्यादा आपकी बुजुर्गी बयान करते. अल्लाह सुब्हानहु व तआला asked them what were they seeking, क्या मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये जन्नत मांग रहे थे. They were asking for Jannah. अल्लाह पूछते हैं have they seen Jannah? The angels say oh Allah, no, they haven't seen Jannah. If they would see Jannah, they would strive more to gain Jannah. और ज़्यादा ज़ादू तलबन, they would strive more to gain Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala asked them, O my angels, what were they seeking refuge from? किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जहन्नम से. They were seeking refuge from the fire of hell. Allah subhanahu wa ta'ala tells the angels, O मेरे फरिश्ते, I make you witness that I have forgiven them all. मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी, सबकी मग़फ़िरत कर दी. Then the angels mentioned that, oh Allah, there was one person who was just passing by. He didn't have the intention to come to this gathering, but he was just passing by and he saw some people gathered for your sake in your remembrance, and he also participated in this gathering. कि एक बंदा जा रहा था, इस मजलिस की नीयत से नहीं आया था, सिर्फ उसने देखा कि चंद आपके बंदे जमा है तो वो भी जमा हो, वो भी बैठ गया. अल्लाह फरमाते हैं हुमुल क़ौम ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम. They are such a great people that whoever will sit with them, he won't be deprived. उनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं होगा. जो है हमारे हज़रत काजी साहब के इल्म उम्र में और अमल में अल्लाह ताला खूब बरकत दे. जो है
ये उन्होंने कहा उस्ताद, लेकिन मैं तो काजी साहब जैसे हमारे जो साथियों को अपने लिए ज़रिए नजात समझता हूँ। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में खूब तरक्कियात से नवाजे। इन्होंने कुछ बात मेरे मुताल्लिक कह दी, लेकिन मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मैं तो अक्सर, मुझे ये शेर याद आता है, एक शायर ने कहा कि यज़ुन्नुन्नास बी खैरन व इन्नी वल्लाहि लशर्रुन्नास इल्लम ताफ़ु अन्नी, कि लोग मेरे बारे में, पीपल अस्यूम दैट आई एम वेरी गुड, मेरे बारे में अच्छा गुमान करते हैं, आई एम वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन इफ अल्लाह डजंट फॉरगिव मी। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू मेक दुआ फॉर मी। ये तो कारी साहब का अच्छा गुमान था, अल्लाह ताला उनके हुस्न ज़न की लाज रख ले। लेकिन यकीनन कारी साहब ने जैसे कहा कि अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में बैठना, टू सिट इन द गैदरिंग ऑफ पायस पीपल इज सो बेनिफिशियल। लाइक कारी साहब मेंशन द शेर Sheikh Sadi, he said, few moments sitting in the company of pious is better than 100 years of worship with sincerity, without riyakari. एक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर as 100 साल ताअत रिया। Someone asked Hazrat Maulana Shafari Thanvi Rahmatullah कि हज़रत इतना बड़ा दावा, such a great claim, कि few minutes in the company of pious is better than 100 years worship। हज़रत ने फरमाया कि ये तो बहुत कम कहा। हज़रत ने फरमाया ये तो बहुत कम है, मैं तो कहता हूँ कि 1000 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। क्यों कि अल्लाह वाले की मजलिस में जो बैठता है अच्छी नीयत से जो है, और अल्लाह वाले की जो ख़ास इनायत उस अल्लाह वाले पर अल्लाह की पड़ती है, तो अल्लाह ताला पास रहने वाले को भी महरूम नहीं करते। अल्लाह doesn't deprive those people who are sitting by the fires। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, who was from our elders, so once someone asked him कि हज़रत ulama say in their bayans, and many people have the desire that we get buried next to a pious wali, हमारी तमन्ना होती है कि भाई किसी अल्लाह वाले के बाजू में हम दफन हो। Why is that? Everybody is in his own grave, what benefit will that person get? ये क्यों तमन्ना करते हैं? खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाब कायम किया है, बाबु मन अहब्बा अयुदफन फिल अर्दिल मुक़द्दसा, कि आदमी ये पसंद करे, a person has a desire to be buried next to in a holy land or next to a pious person। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस लाए हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की थी। When the time came close of Musa अलैहिस्सलाम, he requested Allah कि अल्लाह make my grave in the holy lands, जो है, और अल्लाह fulfilled his request। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र, those have you been to Aqsa, may Allah take us all time again and again with acceptance। तो जो भी गए हैं, about 10 minutes drive from Masjid Aqsa, there's a place called An-Nabi Musa, and Musa अलैहिस्सलाम's grave is there, जो है, तो Allah accepted his dua। तो someone asked Hazrat Sheikh Nanotwi Rahmatullah कि why is that? हज़रत ने अजीब जवाब दिया, you know, अल्लाह वाले, Allah Ta'ala sometimes gives them such a wisdom। So Hazrat said to a person to do fun manually, in that time they didn't have the electric fans, so Hazrat told him there are sheets and ropes। तो हज़रत ने कहा कि मुझे पंखा करो। So that person started doing पंखा and fan। Then Hazrat asked that person, are you getting the cold air? He said yes। तो हज़रत ने पूछा कि भाई who is he doing पंखा, to me or you? He said हज़रत आपको पंखा कर रहे हैं। तो फरमाया कि जो है, जैसे मुझे पंखा कर रहे और तुम्हें ठंडी हवा मिल रही, इसी तरह अल्लाह वालों को जो के करीब जो दफन होता है अल्लाह उसको महरूम नहीं करते। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह was from our great elders, when he passed away, someone saw in dream, someone was announcing कि आज हज़रत की बरकत से हमने पूरे कब्रिस्तान वाले से अज़ाब उठा लिया। तो अल्लाह वालों की बरकतें होती हैं, अल्लाह वालों के अपने साथ एक कनेक्शन रखें, दुनिया में भी फ़ायदा देगा, आखिरत में भी उसका फ़ायदा होगा। हज़रत हसन बिसरी रहमतुल्लाह, he mentions in the tafsir, फमा लना मिन शाफिईन वला सदीक़िन हमीम, कि क़यामत के दिन when some pious people will request Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, such a person, he used to do so many favors on me, he used to feed me, he used to give me, do so many favors in this world, where is he today? Allah will say, due to his bad deeds, he is in Jahannam. That pious person will request Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, I beg you, please give me the permission to do shafa for that person. So
Allah will give that person permission. He will go and he'll do shafa for that person who will be in Jahannam, who did favors upon that person in this world. And through his shafa, Allah subhanahu wa ta'ala will release that person from Jahannam. When the other Jahannamis will see this, they will say in quite a regret and sorrow, فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ कि हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला नहीं. He is such a fortunate person that Allah has given him najat from Jahannam by shifarish of a pious person. There is no one to do shifarish for us. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. और हमारे लिए there is no close friend who can help us today. So it's really blessed to sit in the company of pious people. Hazrat Luqman advised his son, Luqman Hakim, he advised his son, عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَتْقِيَةِ. O my dear son, sit in the company of scholars and pious people. क्यों? Allah subhanahu wa ta'ala उसके ज़रिए से मुर्दा दिलों को जिंदा करते हैं. Allah enlightens the heart. So Hazrat Luqman advised his son, make sure you sit in the company of pious people and take them mashwara. It will benefit you in this world and the hereafter. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us countless opportunities to sit in the company of pious people and awliya. So my main topic is about Ramadan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has made us Muslims, and a Muslim is like a businessman. Hazrat Mufti Taqi Saheb फरमाते एक मुसलमान ताजिर की तरह है, is like a businessman. और जैसे बिजनेसमैन के सीजन्स होते हैं, क्रिसमस के वक्त आप देख ले कि कितनी मेहनत करता है, रात दिन, डे एंड नाइट, न खाने की फिक्र है, न सोने की फिक्र है. कोई उसके पूछे कि तो वो यही कहेगा कि भाई दिस इज अ सीजन ऑफ बिजनेस, इसमें मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा तो ये बी ईजी फॉर मी थ्रू आउट द ईयर, बी ईजी फॉर मी, पूरा साल मेरे लिए गुजारना आसान हो जाएगा. इसी तरह ईस्टर है, सीजन्स है. तो हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मेड सम सीजन्स फॉर गुड डीड्स. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमाल के लिए भी कुछ मवासिम रखे हैं कि उसमें थोड़े वक्त में, शॉर्ट टाइम, अ पर्सन कैन गेन अ लॉट. थोड़े वक्त में आदमी बहुत कुछ हासिल कर सकता है. एक मुसलमान जो है ये मंजिल ताजिर है, और जैसे ताजिर दुनिया में खूब फिक्र करता है और मौसम में खूब रात दिन मेहनत करता है, जो है बाज़ मरतबा उसको खाने की भी फिक्र नहीं, सोने की भी फिक्र नहीं. क्यों? कि उसके सामने बड़ा प्रॉफिट का मार्जिन है कि भाई मैंने इसमें मेहनत कर ली. इफ आई ट्राई हार्ड इन दिस सीजन आई विल गेन अ बिग प्रॉफिट व्हाट आई विल नॉट गेन इन नॉर्मल डेज. तो कितनी मेहनत करता है, रात दिन एक करके वो तिजारत करता है. तो इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कुल्लु नास यग़दु, हर इंसान, ईच पर्सन गोज़ आउट इन द मॉर्निंग फबाइउन नफ्सहु फमुतिकुहा औ मुबिकुहा. वो he sells himself, either he makes himself free from Jahannam or he puts himself towards Jahannam. जो है दो किस्म की मेहनत है, टू काइंड ऑफ एफर्ट्स. जो है या तो वो अच्छी मेहनत करेगा जिससे वो अपने आप को जहन्नम से बचाएगा, या अल्लाह बचाए ही मेक द रॉन्ग एफर्ट एंड पुट हिमसेल्फ टुवर्ड्स जहन्नम. सो एवरी पर्सन गोज आउट इन द मॉर्निंग, जो है, और हर इंसान मेहनत करता है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमें भी कुछ सीज़न दिए हैं. उन सीज़न में से रमज़ान मुबारक है. रमज़ान मुबारक इज़ अ ग्रेट सीज़न फॉर गुड डीड्स. जो है और इतना ब्लेस्ड मंथ है कि हदीस में आता है कि तुज़ख़रफ़ुल जन्नह मिन हौलिन इला हौलिन, कि जन्नत इज़ डेकोरेटेड फ्रॉम वन ईयर टिल द नेक्स्ट रमज़ान, वन रमज़ान टिल नेक्स्ट रमज़ान. रमज़ान को जन्नत को मुज़य्यन किया जाता है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम before 2 months before Ramadan, he used to make this dua when he used to see the moon of Rajab. He said, Allahumma barik lana fi Rajab. Allah grant us barakah in Rajab. Wa barik lana fi Sha'ban. Allah grant us barakah in Sha'ban. Wa ballighna Ramadan. Allah give us the life until we reach Ramadan. जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 months पहले दुआ करते थे. वैसे तो इस्लाम में जो है हर मौके की दुआएं हैं. हदीस में आता है when the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to do the moon sighting, he used to say hilalu khairin wa rushnin, hilalu khairin wa rushnin, may this moon be
द मून ऑफ गुड एंड गाइडेंस जो है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन द कमिंग डेज। इस महीने में पता नहीं क्या मुसीबतें आने वाली, क्या आफात आने वाली। तो द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से हिलाल खैरिन व रुश्द, देन ही यूज्ड टू मेक दिस दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिस्सलामति वल इस्लाम, कि अल्लाह ये चांद को हम पर जाहिर कर दे पीस के साथ, सलामती के साथ और इस्लाम के साथ। वल अमनी वल ईमान, वल अमनी वल ईमान। हर मौके पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बताई। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has taught us du'as for every occasion. Hazrat Mufti Taqi Saheb, who is one of the great scholars of our time, may Allah grant barakah in his umar, Hazrat Mufti Taqi Saheb फरमाते ही says कि दुआ जो है एक बड़ा कनेक्शन है और लिंक है अल्लाह के साथ। If we pray the du'as which have been taught in the hadith of different occasions, a person can have a very strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala. हर मौके पर अल्लाह ने हमें दुआ बताई है जो है। अब टॉयलेट में जाते हैं, दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ, अल्लाह सेव अस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ शयातीन्स जो है। तो हदीस में आता है these places where shayateen and jinnat are there, so if a person doesn't pray that dua, they try to harm that person. लेकिन when we pray that this dua, a person is protected from Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है। तो ये सब हर मौके की दुआएं हदीस में आई हैं, और इन दुआओं का हम एहतमाम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से एक ताल्लुक़ मजबूत और कवी होगा जो है। ये अल्लाह के कुर्ब और क्लोज होने का एक ज़रिया बनेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद को देखते हुए भी ये दुआ पढ़ते थे, और रजब की मून साइकिंग होती तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, और रमज़ान के इंतज़ार में रहते थे। यूज्ड टू वेट एंड लुक फॉरवर्ड फॉर रमज़ान जो है कि द ब्लेस्ड मंथ इज़ कमिंग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में रहते थे, रमज़ान के शौक़ में रहते थे जो है कि कितना मुबारक महीना है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि रमज़ान जो है ये आया है रमज़न के लफ्ज़ से। रमज़न के माने टू बर्न समथिंग, और रमज़ान में भी इफ़ अ पर्सन spends the Ramadan in the right manner, fasting and staying away from sins, Allah subhanahu wa ta'ala burns his sins and makes him clear from sins. Allah subhanahu wa ta'ala उसके गुनाहों को जलाकर पाक साफ कर देते हैं जो है। अगरचे और भी उलमा ने मानी लिखे हैं, लेकिन मशहूर ये कि ये रमज़न से है, जिसके माने बर्न करना और जलाना, और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह से पाक साफ कर देते हैं। ये इतना मुबारक महीना है। और जैसे मैंने आपके सामने ये आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े में तीन चीज़ें अल्लाह ने जिक्र की। एक तो लअल्लकुम तत्तक़ून, फास्ट टू गेन पायती, तक़वा तुम्हें हासिल हो। माशाअल्लाह आपकी ये मस्जिद का नाम भी मस्जिद तक़वा है, और अल्लाह हम सबको तक़वा नसीब करे। अल्लाह ग्रांट अस और तक़वा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब जो सैयदुल कुर्रा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टाइटल दिया था अक़रऊहुम लिकिताबिल्लाह, द मोस्ट एक्सपर्ट सहाबी ऑफ कुरान। हज़रत उबई बिन काब अक़रऊहुम लिकिताबिल्लाह, कुरान को सबसे ज़्यादा जानने वाले, तो बहुत ऊंचे और बड़े सहाबी थे। तो हज़रत उबई बिन काब को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा पूछा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आस्क्ड हज़रत उबई बिन काब that what is the definition of taqwa, तक़वा का डेफिनेशन क्या है। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसी ज़मीन पर गए हैं जहाँ थॉर्न्स हो, जो कांटे हो। हज़रत उमर ने कहा, तो कहा आप क्या करेंगे, when you will walk on such a land where there is thorns, and what will you do? तो हज़रत उमर ने कहा, I will be really cautious, मैं अपने कपड़े को ऊपर कर लूँगा ताकि कांटा न लगे। फरमाया यही तक़वा का मफ़हूम है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ तक़वा, that a person spends his life in such a manner and stay away from those things which Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden us। गुनाहों की चीज़ से, अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ से कांटे जगह जगह है जो हमारे दीन और ईमान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इंसान उन चीज़ों से बचे, यही तक़वे का मफ़हूम है जो है। तो अल्लाह ने एक तो फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, सो यू गेन पायती, तक़वा तुम्हें हासिल हो। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो।
ताकि you thank Allah subhanahu wa ta'ala. क्यों? कि जैसे काजी साहब ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम. If you thank Allah subhanahu wa ta'ala on any ni'mah, Allah will increase it. जो है शुक्र से नेमत में इजाफा होता है और नाशुक्री से नेमत सल्ब हो जाती है. नाक़दरी और नाशुक्री से that नेमत is unfavor is taken away from a person. जो है मुझे याद है हज़रत मौलाना असद मदनी साहब दामत बरकातुहु रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने एक मतलब एक अजीब किस्सा सुनाया जो हज़रत मौलाना once he mentioned in his bayan that a time came in India, there was a great calamity on the Muslims और बड़े अजीब हालात थे. तो कहते हैं कि जमीयत उलमा was a very well known organization, mashallah, were working in all occasions in India. So Hazrat Maulana says that we went to some wealthy people. कुछ मालदारों के पास गए कि भाई मुसलमानों पर हालात आए हैं, many Muslims are homeless, if you can help us. So one person who had a very big business, he got angry on us. He said, what you know, you always come for chanda, I'm not going to give anything. And he got really angry, he shut his door and he started shouting. So Hazrat says that after a few weeks, you know, in the same area, some non-Muslims attacked on the Muslims and there were great calamities on the Muslims. So we were giving aid out to people. And there was one person who was covering his eyes and face. So when we were giving the aid out to Muslims, and when that person came near and he removed his sheet from his face, he was the same person who got angry on us 3-4 weeks ago that I'm not going to give you anything. Allah can change our circumstance anytime. But inshallah, if we do shukr, Allah will keep that ni'mah. Allah will grant us more ni'mah. Like the second aim is we do shukr. What Allah has given us on the ni'mah and favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And third is لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, so they can gain guidance. रोज़े में हिदायत और राह रास्त की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से होती है जो है. तो ये रमज़ान मुबारक जो है, it's a very blessed month जो है, which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And according to one narration which Imam Bukhari has mentioned in his Tarikh Kabir, that Bani Israel and the previous nation, they were given this name of fast, but they used to fast in summer, then they changed it to winter, that it's very hard fasting in summer, so they changed it in winter. And one of their kings, ek Badshah, ek bimar hua, he became ill, so they made a pledge, he made a pledge, if Allah cures me and gives me shifa, instead of 30, we'll fast 40. 40 रोजे रखेंगे, उसने नजर मारी. So Allah granted him shifa and they made it 40. Then another king came and he became quite ill. He made a pledge that if Allah gives me shifa, I will fast 40, 47, 7 more. He added 7 more. Then a third king came and he was ill. He made another that if Allah grants me shifa, I will make it to 50. So they changed it. But this Ramadan and the blessings, what this ummah has been given, no other ummah was being given. Imam Bayhaqi rahimahullah narrates one riwayat in which he says that Alhamdulillah, 5 things have been given to this ummah which previous nations were not being given in Ramadan. One is Allah subhanahu wa ta'ala looks with the nazar of mercy from the first night, with special mercy on this ummah. Allah khas nazar rahmat se dekhte hai. Number 2, the angels ask forgiveness for those who fast day and night. Farishte jo hai rozedaron ke liye Allah se maghfirat mangte hain. They ask forgiveness. Isiliye Rabi ibn Khaytham, he was one of the great scholars of his time. He says the angels and the Anbiyas are so they have so much sympathy for us. कि अंबिया और फरिश्ते इंसान के बहुत खैर खा है जो है. And then he says the farishtas and angels, they don't expect anything from us. उनकी हमसे कोई उम्मीद नहीं, माल की या किसी लालच की जो है.
only for the sake of Allah, they ask forgiveness for human. इंसान के लिए वो मगफिरत मांगते हैं, यहाँ तक कि according to one narration, which is in many kitabs of hadith, that when a person sits in a masjid from one salah to other salah, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, the angels make dua for that person. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Oh Allah, forgive this person. Oh Allah, have mercy on this person. तो हज़रत रबी फरमाते हैं कि फरिश्ते इतने खैरखा है कि उनका हमसे कोई मकसद वाबस्ता नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं. तो second ne'mat, that the angels ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for those people who fast day and night, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं. And the third ne'mat of Allah subhanahu wa ta'ala is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions in the hadith, La khalufu famis sa'imi atyabu indallahi min rihil misk. The smell of a person who fasts is better than the smell of original misk. There's many explanations of this hadith. Some ulama say if a person gives original misk in charity, which is very expensive, it's very hard to get. One brother in Blackburn, a couple of months ago, he said, Mustafa, he came to me, he said, Mustafa, I want to show you something special, very special. So he brought this, like it was a woolen thing. In appearance, it seemed like the sacks. So like a ball and a sack covered with it. So he said, Mustafa, you know what this is? I said, no. He said, this is the nafa of a musk, original musk. And I was looking for it for so many years. But Alhamdulillah, just 3-4 years ago, I gained it and I paid about 6,000-7,000 pounds for it. Through a person in Singapore who is special in this field. So original musk is so expensive and it's very hard to get. So the Prophet ﷺ says the smell of a mouth of a person when he fasts is better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than the smell of musk. Some ulama have explained it that the meaning is if a person gives the original musk in charity, the reward he'll get, Allah will give him more reward on his fasting. Some ulama have explained this hadith and there's many other explanations. एक ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ क़यामत के दिन उसके मुंह से मुस्क से बेहतर fragrance will be coming from his mouth better than original musk जो है. क्यों? कि क़यामत के दिन there will be many signs of many sinful people. जैसे हदीस में आता है निशानियाँ होगी, इसी तरह नेकी की भी निशानी होगी. शहीद का जो blood होगा, the color will be a blood but the smell will be original like a musk. So the third thing I mentioned, Imam Bayhaqi Rahimullah says that this ummah especially has been given. First is the sight of Allah with mercy. Number two, the forgiveness and istighfar of the malaika for the person who fasts. Number three, the smell of the mouth of that person who fasts is better than the misk in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Number four, Jannat is being decorated. Jannat ko muzayyan kiya jata hai, like I mentioned earlier on, from one Ramadan till next Ramadan. And number five, in the last night of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala forgives everyone. Sabki Allah subhanahu wa ta'ala maghfirat farmate hai. So it's such a blessed month of Allah, this Ramadan which Allah has given us. So great month of Ramadan that in one narration, the Prophet ﷺ, in the last days of Ramadan, he gave a sermon to the Sahaba and he mentioned the virtues of Ramadan. It's a lengthy hadith. The Prophet ﷺ said, قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ. A great month is come close by. And this month in which a person gets the reward of a nafil like the reward of farz. And the reward of one farz is multiplied 70 times. Sab'ina faridatan. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala multiplies the reward of one farz 70 times. Like He's done 70 farz. You pray 2 rakats of farz and you get the reward of 140 rakats of 2 rakats. Such a great month, such a month of blessing. And the Prophet ﷺ further mentions, فيه ليلة خير من ألف شهر.
there is one night in this blessed month which is better than 1,000 nights. 1,000 रातों से better than 1,000 nights. Shahrun awwaluhu rahmatun. This month, the first 10 days are of mercy. Wa awsatuhu maghfiratun. The middle 10 days are the days of forgiveness. Wa akhiruhu itkum minan nar. And the last 10 days are the days from release from the fire of hell. Jahannam se chutkare ka 10 din hai. Yahan bhi many ulamas have explained this hadith in many ways. Some ulamas say those people who are pious and hardly do sins, Allah's mercy is with them from the first day of Ramadan. And those people who are sinful, Allah subhanahu wa ta'ala, after doing some good deeds, in the middle 10 days Allah forgives their sins. And those people who are more sinful, in the last 10 days Allah grants them release from the fire of Jahannam. So, this is such a blessed month of Allah, Ramadan, which Allah subhanahu wa ta'ala has granted us. In one narration, एक hadith में आता है कि two angels descend every morning and they make an announcement, Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. O the seeker of good deed, go ahead. Go ahead. Try to do as much as good deeds as you can. And all the seeker of bad, afraid from sins, गुनाह से रुक जा, जो है ये गुनाह का ज़माना नहीं है, जो है. Or like I mentioned the hadith in the beginning, the Prophet ﷺ says, when Ramadan comes, the doors of Jannats are opened. Yahan bhi there's many explanations, lekin many ulama say, one meaning is Allah subhanahu wa ta'ala grants the tawfiq to so many people to do good deeds. We see in normal days many people don't pray salah, they don't even touch Quran, but in Ramadan, mashallah, they're reading day and night. Alhamdulillah. Allah gives the tawfiq of good deeds, and the doors of tawfiq are open for so many people. Allah grant them tawfiq to good deeds. And we should remember, always ask tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala for good deeds. One dua of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was, Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, mujhe un a'mal ki tawfiq de, jisse aap razi ho, aur jo aap pasand kare. Which you give me the tawfiq of those deeds with which you are pleased with and you like. So we should always make this dua. If Allah subhanahu wa ta'ala deprives a person from good deeds, may Allah save us all. That person will have the opportunities of good deeds, yet he will be deprived. I've seen many people, Allah bacha, in near Haram, they are where namaz is going on in Haram, and they're on their phones or busy in something else. Such a great opportunity. One of our pious scholars, he told me once, and Ajib, may Allah say, he said, we went a few years ago to Haram, and we were just staying opposite Haram, maybe about 2 minutes to walk. And the guy who was in reception, we told him, come for Salah. So he said, I can't. Then we had a conversation with him. So he said that Alim said, I asked him that, mashallah, you're so lucky, Haram is in front of you. So maybe you have the opportunity to go in every Salah. So that person had tears in his eyes and he said, I haven't entered Haram since 2 years. Bilkul, Haram is opposite that person. So if a person is deprived from good deeds, that's why the Prophet ﷺ said, Al-mahrumu man hurima al-khayra kullah. The most deprived person who is deprived from good deeds. सबसे mahroom वो है जो अमाल खैर से Allah mahroom करे. इसलिए that's why we should ask Allah subhanahu wa ta'ala and make this dua constantly. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda, for good deeds. So Ramadan is such a blessed month which Allah subhanahu wa ta'ala has granted us, and it's a very good season for good deeds. A person can gain so much in this blessed month if he utilizes his time. Our elders and our mashayikh, mashallah, they used to really spend this time really wisely in good deeds. Hazrat Shaykh Zakaria rahmatullahi, he used to do about 40 paras every day, one khatam and 10 paras. And Hazrat says that even the women of our family, they read about 15 to 20 paras daily, even though they had so much commitment.
So many guests used to come and they used to cook for the guests and so many commitments. Yet हमारे घर की औरतें भी रोजाना 15 से 20 पारे पढ़ लेती हैं. They read in Ramadan, the women's of our family, they read 15 to 20 para daily. And as Sheikh Zakaria Rahmatullahi, even though he had so many commitments, yet he used to read one khatam and 10 paras daily. We read in the biography of Imam Hanifa Rahmatullahi, he used to finish about 40 to 50 khatams in Ramadan. Also many other pious people, when we read the halat, we get shocked that they used to utilize this time in such a manner. They didn't waste 1 minute of Ramadan. Hazrat Sheikh Zakaria Rahmatullahi, when people used to go to spend the last 10 days by him, Hazrat used to say कि देखो ये रमज़ान की गरिया बहुत कीमती है, या तो कुछ पढ़ने में गुजारो, और अगर कुछ if you can't read anything, go to sleep. Please don't waste time in false conversations. फजूल बातों में अपना वक्त न गुजारो. ये रमज़ान का महीना फजूल बातों में गुजारने का नहीं है जो है. And one narration, Hazrat Mufti Shafi Saheb has narrated, إذا سلمت رمضان سلمت السنة كلها. If a person spends Ramadan in a right way, inshallah by the barakat of this, whole year will go in good deeds. Allah पूरे साल नेक अमाल की तौफीक देंगे. रमज़ान में हमने अच्छी तरह रमज़ान गुजारा अमाल में, तो अल्लाह उसकी बरकत से पूरे साल नेक अमाल की तौफीक देंगे. I've seen many people who didn't pray and they were so far away from deen, but alhamdulillah in Ramadan they were punctual on their salah and tilawat. Alhamdulillah their whole life changed. रमज़ान की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी. तो मेरे दोस्तों और माय फ्रेंड्स, अल्लाह ने हमें एक बहुत कीमती महीना दिया है, काश के हम कदर कर लें. एक अल्लाह वाले कहते हैं कि हर रात, every night is the night of qadr, if we have the qadr of that night. हर रात शब कदर है अगर दिल में कदर हो, और अगर दिल में कदर ना हो तो शब कदर को भी इंसान यूं ही ज़ाय कर देगा. So, my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has granted this blessed month. We should ask tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala and try to prepare ourselves for this blessed month. अगर पहले से हम नेक आमाल की आदत बनाएंगे जो है, तो रमज़ान मुबारक जो इंशाल्लाह नेक आमाल में गुजरेगा. अल्लाह से खूब तौफीक मांगे. Ask from Allah subhanahu wa ta'ala, beg from Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah give us tawfiq to spend this Ramadan in a proper manner. जो Hazrat Mufti Taqi Saheb says कि रमज़ान मुबारक या तो हरमैन शरीफैन में या फिर जो है घर पर खानकाह में इबादतों में रमज़ान. You know the value of Ramadan, how our elders spent their Ramadan. There is a kitab with Hazrat Sheikh Zakaria Rahmatullahi has written, Akabir ka Ramadan. We should read it. I hope inshallah, I'll request Qari Saheb if you can do Ta'aleem in Ramadan. It's a very beneficial kitab. The Ramzan of our elders, Akabir ka Ramadan, and Hazrat has explained how our elders used to spend Ramadan. They used to utilize each and every minute of Ramadan. They didn't used to waste their time. We get shocked, many of our elders only used to sleep for 2-3 hours in Ramadan. And Hazrat Rabia Bisriya Rahimahullah, I read an article about her. She was a very pious waliya. So someone went to meet her. So she was reading Nawafil after Taraweeh. Then someone said, you'll be able to meet her after Fajr. When he came after Fajr, she was still reciting the Quran. And then when the time of Ishraq came, she started reading Ishraq. After Ishraq, she went to sleep. And she woke up after maybe less than an hour. And she started rubbing her eyes and she was praying this dua, Allahumma inni a'udhu bika min aynin la tashba'u min an-nawm. Ya Allah, मैं ऐसी आँख से पनाह मांगती हूँ. I ask refuge from such an eyes which are not filled with sleep. जो आँख नींद से न भरे. So our pious elders, mashallah, they spent Ramadan in such a manner. We should read their halat and their biography, how they spent the Ramadan, how they had the value of this blessed month. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the value of this great month. We're very close. We have spent so many Ramadan, but we should make an intention that inshallah this Ramadan we'll try to spend it in the best manner. Remembering Allah subhanahu wa ta'ala
reciting the Quran as much as we can, and doing good deeds. The Prophet ﷺ said, चार चीज़ों का एहतिमाम करो, 4 things. 1, to pray kalima tayyiba la ilaha illallah, recite kalima more frequently. Number 2, istighfar. And number 3, ask Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah. And number 4, ask refuge from the fire of hell. And many of our elders have gathered all these 4 things in these: astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah, wa a'udhu bika minan nar. La ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah, wa a'udhu bika minan nar. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to spend this month in a right manner, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of to be more closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all tawfiq to act on what is said, and grant us the real value of this blessed month. And may Allah save us from those people who are deprived in this month. The last thing I wanted to mention, the Prophet ﷺ, once he climbed on the mimbar on the first step and he said Ameen. Then on the second step and he said Ameen. And then on the third step and he said Ameen. The Sahaba asked, Ya Rasulullah, why did you say Ameen? He said, Hazrat Jibreel came and he made 3 but du'as. One of them is Man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu. That person who gains Ramadan, yet he doesn't make such an effort through which he is being forgiven. It means he doesn't do qadr of Ramadan, jo Ramadan ko zaya kar de aur maghfirat ka saman na kare. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from being deprived in this blessed month and grant us tawfiq to do more deeds in this month. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.